Hi guys, welcome back to the Nifty City channel. So, thank you so much for watching our videos. If you are watching the last week in fact has been very good for us. बहुत अच्छे trades मिले, analysis was on point, market is kind. Now, moving forward, let's see the outlook. Today is our weekly video. So definitely we'll be seeing a broader picture as well, and also intraday for tomorrow. That is Monday, what the plan is going to be. Right? So let's dive in. What we have for us right now in front of us is the Nifty weekly chart. Okay. Now, as you can see, Nifty weekly chart, very important it was to hold the 21 EMA, which it has done here along. Major support इज 17,774 जो मेजर सपोर्ट था वो भी अभी फिलहाल होल्ड किया है. नाउ एज ऑफ नाउ SGX Nifty is showing 150 points up. So considering what SGX Nifty is showing us, we will keep that in mind and let's see moving forward what we can do. Now there is a trend zone that I've drawn here. So you guys can see this one point here. ये है. Okay, so this trend zone cross होना is very important for Nifty. Now, in case 17,774 breaks, then definitely we can retest the 200 EMA, which is 17,500 के आसपास. That much space is definitely open. Okay, 17,300, 17,500, that much space is open. On the upside, now I know SGX Nifty is up, US markets have closed positive, but we don't have to get overexcited. Okay, we have to wait for our levels to break, which is why I'll show you now on hourly chart also is the same thing. One sec. Hourly chart also it is the same thing. ठीक है, बहुत ब्यूटिफुली हम गए, रेजिस्टेंस लिया, वापस आए. अब इधर दो चीजें हो सकती है. ओके, टू पॉसिबिलिटी, टू सिनारियोज कैन प्ले आउट. One is that we remain in the broader range, 17,800 bottom, 18,300 top. ये रेंज में हम प्ले अराउंड करते रहे. नंबर टू सिनारियो इज दैट वी जो लो लगना था वो लग चुका. नाउ वी स्टार्ट द बुल रैली. नंबर थ्री सिनारियो इज दैट वी ब्रेक द सपोर्ट and go lower towards 17,500, 17,300. Now, how do we trade? Okay. Now, assuming this is the 15-minute chart. Now, assuming SGX is positive, anywhere between this range we open. ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लाइन ड्रॉ की इधर 18,080. Okay, this is going to be a very important level. I'll tell you why. So anywhere it opens here in between, ठीक है, if it opens closer to this line तो definitely long trade नहीं लेना है. We have to wait for 18,080 to break. ठीक है, अगर flat खुले, इधर खुले, कहीं भी इधर खुले, we have to wait for it to break. If it breaks 18,080, then a long trade will get initiated. In case we open directly gap up above this, okay, directly we open gap up above this, we have a overhead resistance swing point here along with trend zone wala resistance. So I will not recommend a long. So at this point, if we open gap up here somewhere, maybe there's a little bit of up move. We'll wait for it to retest 18,080 and then we'll see what price action is being developed here. Okay, अगर gap up खुलता है, goes towards the trend zone, falls, breaks 18,080, then definitely we can take a short trade at this point. So that will be very important. In case we open somewhere here and we don't sustain and we start falling, 17,774 this zone. Okay, जो कल का लो था 17,800 to 774, 25 पॉइंट का रेंज है. That is 17,775 to 17,800. This will continue to be the support. Okay, if 17,800, 17,775 breaks, then definitely the market will be in a very negative structure. Okay, now the main reason why I'm telling you guys that don't get overexcited, because if we see our open interest, ठीक है, 18,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, right? So in these scenarios, if we cross 18,080, there will be very good short covering, which will take us at least, I feel, till 18,200. Bull rally confirmation will happen only above 18,300. ठीक है, we need to close above 18,300 to confirm the bull rally. So don't get overexcited seeing SGX Nifty and Dow. Now let's look at Bank Nifty. Okay,
वन सेक। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में पहले तो वीकली चार्ट देख लेते हैं। अब वीकली चार्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, ठीक है, जो काफी टाइम से है। ये ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने वापस रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। इफ आई शो यू द डेली चार्ट, वी वेंट बिलो द ट्रेंड लाइन बट वी हैव क्लोज्ड above the trend line, okay, which is positive number one. What is negative? Negative is we broken the 50 EMA on the daily chart, ठीक है। इसके नीचे की क्लोजिंग आई है, which is not very encouraging. Now बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मंडे को itself ये 50 EMA के ऊपर क्लोज करे। पॉइंट नंबर वन, दैट विल गिव बैंक निफ्टी लिटिल बिट स्ट्रेंथ। बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट विल कंटिन्यू टू बी 41569, ठीक है। ये जो लो लगा था स्विंग पॉइंट, ये एक रेजिस्टेंस था, इधर हमने ब्रेकआउट दिया था, यही हमारा सपोर्ट है। कंटिन्यू टू बी दिस सपोर्ट 41569 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। नाउ इफ यू सी द आर्ली चार्ट, नाउ आर्ली चार्ट पे बैंक निफ्टी हैज लुक्ड वीकर देन निफ्टी, ठीक है। निफ्टी ने फिर भी थोड़ा बहुत रैली किया एंड में, बैंक निफ्टी इज लुकिंग लिटिल बिट वीकर। नाउ विच पॉइंट के ऊपर वी कैन गो लॉन्ग, वी विल सी इन द 15 मिनट चार्ट। ओके, नाउ दिस इज द 15 मिनट चार्ट। नाउ 15 मिनट चार्ट पे द गेम प्लान विल बी सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम आई एम ड्रॉइंग अ फिबोनाची, ओके। अब हम कॉन्फ्लुएंस पॉइंट देखेंगे। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट मुझे मिल रहा है ये स्विंग पॉइंट का, विच इज राइट इन बिटवीन। सो वी विल वेट फॉर 42,833 से लेके 42,900, सो यू कैन से 42,830 से लेके 42,930। दिस 100 पॉइंट रेंज इज गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी। If it crosses 42,930, then definitely we will see it reaching 43,200 first, and then the major resistance zone of around 43,500. So this is our game plan. Anywhere it opens, gap up, wait for it to cross this zone, then only go long. Otherwise, you can also look for a reversal. If it reaches this zone and looks for a reversal, you can look for that as well. Right? So this is the game plan in Bank Nifty. Same extension, if I draw on Nifty, what level am I getting? You can see guys, exactly 61.8%, 18,078, 18,080 पे हमारा resistance marked है, keeping in mind this swing point. Okay, so this is also a resistance, so you can say this zone. Okay, this is 18,120. So this 40 point range, 18,080 से लेके 18,120 is the major resistance in Nifty. So that's all about Nifty. बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे 43,000 पे वेरी हाई कॉल राइटिंग ऑन 43,000। ओके, सो ऐसा हो सकता है, लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट, टू पॉसिबिलिटीज, या तो गैप अप होके वी विल टेक रेजिस्टेंस, या सेकंड वी क्रॉस द रेजिस्टेंस एंड देयर विल बी ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। ओके, तो कल या तो एक बढ़िया रिवर्सल मिलेगा, या कल एक बहुत परसों सॉरी मंडे को बहुत अच्छा एक ट्रेंड मिलेगा, राइट। If you like the video guys, please hit the like button, helps us a lot. We will keep coming up with such videos throughout the week. Also, important announcement, Monday ko, the people who will be watching our videos on Monday, we will be giving a free premium subscription coupon code in the description. Okay, very few people are watching the video, so I want to reward the people who are watching the videos. We will give you premium subscription for absolutely free, and you can join our premium group. Free group भी है हमारा, very nicely on, I think right about here मैंने अपडेट दिया था कि प्लीज एग्जिट योर शॉर्ट्स, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। फ्री ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया था, प्रीमियम ग्रुप में तो आई हैड ऑल्सो सेड आई एम लॉन्ग हियर, ठीक है। सो दिस इज द पावर, ओके, वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू, हेल्प यू in your trades. Obviously, we want you to analyze the markets in your own way. Okay, so do like, share, and subscribe. All the very best for Monday. Keep it up.